हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट NCERT का। लास्ट रन पे हमने चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको 5 तक वर्क दिया था करने के लिए। उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे उसमें 10 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर नोट कर दीजिएगा, तो उसे मैं नेक्स्ट रन पे डिस्कस कर लूँगा। ओके, आज हम एसिड बेस और सॉल्ट स्टार्ट करते हैं, और ये डेली आपको ओके वीडियोस मिलती जाएंगी सीक्वेंस वाइज, चैप्टर 2 की, देन चैप्टर 3, 4। ओके, जो भी केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक है डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियोस का। ओके, सो एसिड बेस एंड सॉल्ट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। एसिड जो होते हैं मोस्टली उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, ओके, खट्टा होता है, और लिटमस पेपर में कलर चेंजमेंट शो करते हैं। कलर इनका जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर अगर होगा तो उसका कलर एसिड में कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। और जो बेसिस होते हैं वो बिटर नेचर में होते हैं। ओके, इनका कलर कैसा होता है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। अगर बेसिस है तो उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर नेचर का होता है, और वो रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, ब्लू कर देंगे। ओके, लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, और ये हमें आगे पढ़ेंगे। ओके, हमें लाइकेन से मिलता है जो कि एक नेचुरल प्लांट में आता है। नेक्स्ट टर्मरिक क्या है, टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है। ओके, ये कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर है हमारे, मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। ये हमारे एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए ये सिंथेटिक इंडिकेटर में आते हैं। सपोज क्वेश्चन अगर आता है कि नेम 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर, so we can write methyl orange and phenolphthalein. And natural indicator we can write litmus paper, okay, and turmeric. Next one is in litmus paper जो होता है, litmus क्या है, एक सॉल्यूशन होता है, पर्पल कलर की डाई है जो हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये एक प्लांट है जो थैलोफाइटा ग्रुप को बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ acids and bases. So for this purpose, okay, we will discuss here activity 2.1. What is given? Collect the following solution, okay, from the science laboratory. HCl लिया हमने, okay, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, नाइट्रिक एसिड लिया HNO3, एसिटिक एसिड CH3 COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH बेस में 2, लॉट्स ऑफ अदर बेसेस, ओके, वी हैव टेकन। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें हम इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे इधर दी सॉल्यूशन इज बेसिक, ओके, और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेट कर रहा है, फिनोल्फ्थलीन में कैसा कलर आ रहा है। सो व्हाट चेंजेस इन कलर डिड वी ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस, ओके, ब्लू लिटमस, फिनोल्फ्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन। different colors we can write here in the box. Okay, so this indicator tells us whether a substance is acidic or basic by change in color. If the substance is acidic, then in litmus paper, okay, color will be from blue to red, okay, or if it is basic solution, so the color will be from red to blue. Okay, next one is that how do acids and bases react with metals. Okay, so how acid and bases react with metal. So here one example is given, like metal displaces hydrogen atoms from the acids as hydrogen gas. So when acid and metals are react, then salt and hydrogen gas is formed. Okay, like example we can take NaOH. NaOH is a base. Okay, this other example is given for acid and metal. We can take acid like HCl, and metal Na we can take. Okay, so the compound salt will be here, okay, NaCl and hydrogen gas H2. Similarly, okay, when metal react with base, then also, okay, salt and hydrogen gas will be formed. So here, okay, Na2ZnO2, which is sodium zincate, and hydrogen gas is formed. Okay, reaction is not balanced, so here we will multiply with 2. Okay,
remember to balance reaction. Okay, if you will just leave the reaction without balancing, okay, so marks will be deducted. Next one is this, how do metals carbonate and metal hydrogen carbonates react with acid? Metal carbonate like calcium carbonate CaCO3, okay, and for hydrogen carbonates means metal hydrogen carbonates, also known as metal bicarbonate, like NaHCO3, okay, is known as metal hydrogen carbonate. Okay, so here we can take the example when sodium carbonate Na2CO3, okay, like metal carbonate react with acid, then salt, water and carbon dioxide gases form. Similarly, in other case also, when sodium bicarbonate we have taken react with HCl, then also, okay, salt, water and carbon dioxide gases form. Okay, and when this carbon dioxide gas, if we will pass this gas with lime water, remember the formula of lime water, okay, CaOH base में 2. So this is a formula of lime water. When lime water react with carbon dioxide gas, then white precipitate is formed, and this is also a test of carbon dioxide gas. Okay, white precipitate will form and water is formed. Due to this white precipitate, the color becomes milky. Okay, so this is a test of carbon dioxide gas. When carbon dioxide gas react with lime water, then it gives milky appearance due to the formation of calcium carbonate. Okay, and when if we take the in carbon dioxide gas in excess amount, then this milky color disappears, and again, okay, CaCO3 and H2O and carbon dioxide will react. Okay, then calcium bicarbonate is formed, which is soluble in water, and in that case milky color will disappear. Okay, so here common and general formula is written, like metal carbonate or metal hydrogen carbonate react with acid, then salt, carbon dioxide and water is formed. Okay, next is how do acids and base react with each other. Okay, so for this purpose we also know that, okay, that effect of base is nullified, means cancelled by acid. Okay, like, okay, there is a acidity in stomach. Okay, so if we use basic, okay, compound, basic substance, okay, it reduces the effect of acidity. Okay, so here also the effect of, okay, base is reduced by the acid and the effect of acid is reduced by the base. Okay, so this reaction is known as, okay, neutralization reaction, like base when react with acid, then salt and water is formed. This reaction is known as neutralization reaction, like base plus acid gives salt and water. Okay, next one is metallic oxide with acid. So remember that metallic oxide behaves as a metallic oxide, okay, in basic in nature. Okay, and if it is base and react with acid, so same reaction, salt and water will be formed. Okay, so metallic oxide is basic in nature. Okay, and non-metallic oxide is acidic in nature. Like example we can take for metallic oxide, Na2O sodium oxide, okay, is metallic oxide. When sodium oxide is react with acid, then salt and water will form. Okay, next, in similar case for non-metallic oxide with base, so for non-metallic oxide with base, like non-metallic oxide we have taken carbon dioxide, and non-metallic oxide are acidic in nature. Okay, non-metallic oxides are acidic in nature. When non-metallic oxide like carbon dioxide react with base like calcium hydroxide, so it produces salt and water. Okay, so similar to reaction between a base and acid, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. So metallic oxides are what? Basic in nature, and non-metallic oxides are acidic in nature. Okay, next, what is the common between that acids and all the bases? So for this purpose, okay,
We have seen that okay, acids have similar chemical properties, and which leads to this similarity in properties. We saw in activity 2.3, acid generate hydrogen ion. Okay, acid generates hydrogen gas on reacting with metal. Just we have okay learned that when acid react with metals, okay, then hydrogen gas is released. Okay, so hydrogen seems to common to all acid. Like when activity is given, we have taken the solution of glucose, alcohol, okay, glucose, alcohol, hydrochloric acid, sulfuric acid, okay, and we will fix 2 nails on a cork in a 100 ml of beaker. Now connect these 2 nails terminals with a battery of 6 volt. Okay, so when we will connect this terminal with a battery of 6 volt and pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Okay, so what will happen? Does the bulb glow in all the cases? Means that glucose is taken, then also bulb will glow. Does the bulb will glow in all the cases? So bulb will start glowing in the case of acids. Okay, acid means like HCl, okay, and sulfuric acid. But that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Okay, so glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution, and the flow of electric current is only possible due to the presence of ions. Okay, so if bulb glows, it means that the flow of electric current is there, and if the flow of electric current is there, it means that ions are present. Okay, so remember that acid contains H plus ions as cation. Cations means those ions which contain positive charge are known as cations. So here acid contains H plus ions, and anions means those, we can say those radicals, okay, or which contains okay negative ions are called anions, like Cl minus in HCl, okay, NO3 minus in nitric acid HNO3, SO4 minus 2 in H2SO4, CH3COOH minus in CH3COOH acetic acid. Okay, so these all are anions. Okay, so since the cation present in the acids is H plus, it means that acid produces hydrogen ions and H plus in solution. Okay, next one is what happened to an acid or a base in a water solution. Okay, so remember that in a water solution, for this purpose we can see this hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. Okay, means the presence of hydrogen ion is only possible when there is a water also. Okay, if acid is there, okay, directly, okay, HCl cannot produce okay H plus ions until and unless water is present. So hydrogen ions presence is only possible okay in acids when there is a presence of water. Without water, electricity will not conduct, okay, and the flow of charge is not there. Okay, so the separation of H plus ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water. Clear? बिना वाटर के प्रेजेंस के H प्लस आयन ओके पॉसिबल नहीं है कि HCl से H प्लस आयन्स फॉर्म हो जाए. क्लियर? नेक्स्ट, सो HCl को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं देन ओनली ओके H3O प्लस आयन्स और Cl माइनस आयन्स फॉर्म होगा. हाइड्रोजन आयन सिंगल ओके एलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके कंबाइंड स्टेट में होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ. लाइक यार ओके H3O प्लस, इट मीन्स H, एक तो H आयन हो गया और H2O, तो दोनों मिल करके H3O प्लस फॉर्म करते हैं. ओके, हियर वी कैन सी दिस H3O प्लस. ओके, दिस H3O प्लस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन. ओके, हाइड्रोनियम आयन. सो हाइड्रोनियम आयन एंड H प्लस आयन्स इन वाटर is form okay when there is a acid okay dissolved in water. Next case we can say of base. Okay, base, in bases okay OH minus ion is only possible okay when there is a presence of water. Okay, similarly in KOH okay
KOH is solid in nature when there is a presence of water, then only K plus and OH minus ion is formed. Second simple magnesium hydroxide magnesium hydroxide Mg+2 और OH -2 में ब्रेक तभी होगा जब वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस होगी. वाटर की प्रेजेंस नहीं होगी सो OH माइनस आयंस फॉर्म नहीं हो सकता. ओके, रिमेंबर दिस ऑल्सो. डिफरेंशन मोस्टली कैन कम इन एग्जाम. व्हाट डू यू मीन बाय एल्कलीज? सो एल्कलीज आर व्हाट दोज बेसिस which are soluble in water. Okay, only those bases which are soluble in water are called alkalis. So we can conclude from here that all bases are not alkalis, but all alkalis are bases. Okay, so all bases do not dissolve in water, and alkali is a base that dissolve in water, and they are soapy to touch, bitter and corrosive in nature. Okay, next example we can take. This is very important activity. 2.10. Here what we have taken, 10 ml water in a beaker, and we are adding a few drops of concentrated H2SO4. Okay, and swirl the beaker slowly, and if we will touch the base of the beaker after adding H2SO4 in water, so what we conclusion is what we will feel the change in temperature. Okay, here one line is written, is this an exothermic? So exothermic and endothermic reaction we have already discussed in chapter number 1. Okay, chapter 1 में हमने डिस्कस किया हुआ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को. कोई कंफ्यूजन हो तो जस्ट मूव टू चैप्टर 1 एंड देयर यू कैन सी. ओके, सो एक्सोथर्मिक मीन्स जहाँ पर हीट रिलीज होती है, एंड एंडोथर्मिक जहाँ पर हीट हमें देनी होती है, लाइक किसी कोल से या किसी सोर्स से हमें प्रोवाइड करानी होती है. ओके, सो बीकर को हम जब टच करेंगे तो वी विल फील वार्म. ओके, सो it means that the process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic one. Okay, so remember this. Okay, the acid must always be added slowly to water with constant stirring. हम हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करेंगे. ओके, ताकि वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में ऐड करेंगे, बिकॉज अगर हम वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में ऐड करते हैं सो इट विल प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट, and due to that heat beaker can broke or an explosion can be there. Okay, so always add water. Okay, always add concentrated acid in water. Okay, because if water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass container may also break due to excessive local heating. Okay, so remember, while adding while making that acid dilute, always add acid in water. Okay, not water in acid. Remember. Next one is that how strong are the acid or bases solution. Okay, so the which is acid or basis is a stronger one. This can be indicated with the help of indicator. Okay, so for this purpose, this diagram we can see here. Okay, this all depend on the hydrogen ion concentration. Okay, pH value here. Okay, we can see pH value is an indicator. Okay, which represents like we do this by making use of same universal indicator, which is a mixture of several indicators. Okay, and the universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution. Okay, so universal indicator क्या होता है? ये एक different color को show करता है, different indicator का mixture है, and a scale for measuring hydrogen ion concentration. जो scale use करते हैं हम hydrogen ion concentration को measurement करने के लिए, उसे हम pH scale बोलते हैं. ओके, और यहाँ P का मतलब होता है पोटेंस जर्मन लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है पावर. सो pH स्केल जो होता है ये लाई करता है 0 से 14 तक, जहाँ पर अगर वैल्यू 7 से ज़्यादा है इट मीन्स जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है,
और अगर वैल्यू 7 से कम है इसका मतलब वो एसिडिक नेचर का है। लाइक किसी की वैल्यू है pH 4, तो pH 4 मीन्स वो एसिडिक नेचर का है, और किसी की वैल्यू है pH हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 5 दी गई है, तो ज़्यादा ओके एसिडिक कैरेक्टर किसका है, pH 4 का कि pH 5 का। सो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, pH 4 का। ओके, सिमिलरली इन बेसिस सॉल्यूशन में अगर किसी की हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन अगर दिया गया है सपोज 8 और किसी का दिया गया है 9, तो जिसका 9 है वहाँ पर ओके वो ज़्यादा कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, वो ज़्यादा बेसिक नेचर में। ओके, हेयर वी कैन सी लाइक डायग्राम इज गिवन, न्यूट्रल 7 पे न्यूट्रल होगा, ओके, नाइदर बेस नॉर एसिडिक इन नेचर। This arrow indicate, okay, this line indicate that the basic properties increases, and here it is indicate that the acidic property increases as we move from 7 to 0, okay, and here basic properties increases as we move from 7 to 14. Okay, clear? Next one is, here some solutions are given and just color of pH paper, okay, this activity is given, okay. This activity you can do in your school laboratory, okay. Next one is that remember the pH value of blood, okay, in 1 marks or half marks, okay, it can come in your exam, okay, that the pH value of pure water blood is okay 7.4, okay, and milk of magnesia को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, फॉर्मूला इसका होता है MgOH बेस में 2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक नेचर का होता है, इसकी pH वैल्यू होती है 10, ओके। रिमेंबर, सो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयन प्रोड्यूस्ड। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा, ओके, और OH आयन ज़्यादा है, इट मीन्स बेसिक कैरेक्टर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ओके। हेयर वी विल सी दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। सो प्लांट्स और एनिमल के लिए pH का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, तो हमारी बॉडी का जो pH रेंज होता है वो 7 to 7.8 होता है, ओके। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो pH जो वैल्यू है वो लेस हो जाएगी, और जो हमारे टीथ के लिए हार्मफुल है, ओके, जैसे टूथ डिके होगा, ओके। सो रिमेंबर दैट, ओके, वी शुड नॉट eat, okay, those things. So pH वैल्यू का लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो रेन वाटर होता है अगर उसका pH वैल्यू 5.6 से कम है, इट मीन्स वो रेन कैसा है, वो एसिडिक रेन है, ओके। और जब वो एसिडिक रेन, एसिड रेन, ओके, जब रिवर वाटर में फ्लो होगा, रिवर में जब फ्लो होता है तो रिवर वाटर का pH वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द aquatic life, okay, for the aquatic animals, okay, that live in that river, okay. So today, okay, we will stop here only, okay, we will continue this chapter only on next day, okay. Second part, this is the first part of the chapter number 2, acid, base and salt. Second part we will discuss tomorrow, okay. So watch this, okay, wait for the next video, okay, we will upload, okay, soon. Thank you.